startup, the idea can be anything. It can be an e-commerce company, it can be a small retail outlet which you'd like to take up as a startup. But first thing that as an entrepreneur, the person should do is do the market analysis. That's why I have taken market analysis as one of the topic for our discussion in our first session, right? See, unless until market analysis is done properly, you cannot venture out into the startup, right? Because you should know where exactly are you going to stand, right? Who are your competitors? What are the requirements? Whether really there are requirements for your services or products or goods, that you have to analyze first. Otherwise, if you directly jump into the market without knowing how exactly the market is for that particular service or product, you will never know how much growth you will be achieving in coming time. Right? So this was a topic which I delivered last year, not last year exactly, last January, with few of the students from SCO. Right? So market analysis, can somebody guess what can be a layman's definition of market analysis? Anybody in the group? Analysis is basically ruling out. So I think market analysis is to actually rule out that where you're going to stand in the particular market you are looking forward to establish your business in. An example could be that if I'm trying to sell a car or start up a venture which is going to make cars, I have to be knowing who my competitors are, what kind of cars are trend in the market, what the customer needs are, and that could be an example to explain market analysis. Take whatever you have said. See, this is the Buddhist definition which is in front of you. It says that market analysis is both qualitative as well as quantitative assessment of a market. Now, what to assess? See, market analysis examines the market size. How big is the market? Like you have given the example of cars. For example, if I am into manufacturing of cakes, bakery, right? So I should know how large is my market, to what extent I can go and deliver cakes if I'm producing cakes, if I'm making cakes, right? Various market segment. What are the segments in that particular market size? Customer buying patterns, right? How are the customer reacting? Who are your customers? The competition or the competitors, you should be aware of that also. And the overall economic environment. It is important because market analysis is important because it helps to determine the trend within a market and to understand the need of introducing a new product. You have to really find out whether new product is needed or not. Right? Whenever you are introducing a new product, you have to do market analysis. That's why it's important. Or redesigning the existing product to meet the needs of customers. See, market analysis is nothing, in simple words, knowing the needs and wants of the customer. Whether they would like to have, what are their requirements, what are their needs, and what sort of product they'd like to have, right? Like, for example, EV, electric vehicles, right? It's a new product. It's a new product sort of, right? Earlier it was not there. You go back a decade back, not by a decade, 5 years, 6 years back, EV was not into trend, and nowadays the EV is catching up because we all know it's quite economical compared to the petrol and diesel version. Right? So many of the customers or consumers are preferring EVs, electric vehicle, may it be two-wheeler segment or four-wheeler segment. And many of the industry giants are jumping into this particular technology. So before jumping down, if you know what is going to be the demand, right? Because I do not know whether you have heard this news or not. Mahindra & Mahindra, one of their version of Scorpio, they sold out 1 lakh vehicle in a single hour. By single hour, in 30 minutes, the booking was more than 1 lakh vehicle. So their prediction, they were not able to predict the demand. They never thought the customers, they are wanting that particular Scorpio as a product. Right? So doing market analysis is very important, and it will help you out in what? In covering up the supply-demand gap. Right? So if you know the demand, you can produce accordingly. Many a time you may overproduce, and that may stack up as an inventory. So it is the best of your fund.
your fund will get stuck up in the inventory. So knowing market analysis, doing market analysis and predicting the demand, right? Knowing the demand. See, you cannot exactly predict it, but even if you are close enough that you will be knowing how much has to be produced. Will you be getting me what I'm saying up till now? Right? Yes, sir. Yeah, good. And so these are the subsets of market analysis. What are these? What are those? First is industry analysis. As an industry, like for example, car industry, that is automobile industry. So this analysis will be different compared to if you compare it with what textile. That analysis will be different. So industry-wise, you have to do entry and exit strategy. Here in market analysis, you have to decide when to enter the market and when to exit the market. Whether this exit strategy is needed or not, that also you have to determine, right? And market regulation, you have to follow all the laws, rules and regulations drafted by the government for that particular industry. For example, as I said, automobile, then you have to follow all the environmental norms which are prescribed by the government through various legislation. Now, market analysis also include market research and marketing analysis. See, market analysis and marketing analysis both are different. You have to remember this cannot be used interchangeably. Okay. So this PPT you will be getting on LMS platform. Don't worry about it. You can ask the admin or the coordinator of this course. Yeah, somebody has raised their hand. Just yes, Rosaline. Yes, sir. Yeah. Sir, you said that market analysis and marketing analysis is different. So, what is marketing analysis? Yeah, I'm coming to that. See, market analysis is all about this, right? It includes industry analysis, it includes entry and exit strategy, as I said. Just a moment. And market regulations, right? Whereas marketing analysis include, you can see, I do not know whether all of you have attended my earlier class on marketing. Marketing, I always talk about 7 P's. Can somebody recall those 7 P's? Marketing analysis is related to all these 7 P's. In fact, only 4 are given here, but marketing analysis involves analysis of all these 7 P's. So what are those 7 P's? Can somebody recall? Price, product, place. Price, product, place. Yes, sir. Promotion. Price, people, product, Promotion. physical evidence. Promotion. Remaining 3. What are the 3? People, physical evidence. People, correct. Product, price, promotion, people, process, place. Physical evidence. Yeah, fine. Good. I'll repeat for you. See, the first 4 P's are related to product, whereas these remaining 3 P's out of 7 are related to service. Right? So we always start with product, price, place, promotion. These are purely related to physical goods or product, as we call it, goods, right? GOODS, goods. Okay. And remaining 3 P's, people, processes, and physical evidence. So marketing analysis is analysis of all these 7. You can remember this way also, right? Otherwise, there it is mentioned, distribution is mentioned, then promotion is mentioned, sales, which is sales analysis is mentioned, and advertising analysis. In fact, I would like to count all 7 P's as a part of marketing analysis. Market analysis, as I said, marketing analysis and market analysis is again will comprise of target market, market size, market trends, market segments. And market segments will comprise of customer analysis, product analysis, price analysis, place analysis, and competitors analysis. So I hope these subsets are clear with all of you. Now, how to do the market analysis? See, there are various tools and techniques which can be utilized to do this market analysis. SWOT analysis is one of the analysis through which you can do the market analysis. Now, what does SWOT stands for? It stands Strength, for weakness, opportunity, strength, threats. weakness, opportunities, and threat. Very good, Abhishek. You see, a threat you can replace by C also, that is challenges. Right? Many a time it is also called as SWOT analysis, SWOC, SWOT. So SWOT analysis, you analyze the market. See, this strength and weakness are internal to the organization. Strength of the organization, weakness of the organization, you can count that way. You can count
through product also, strength of the product, that particular product, and weaknesses of that product. See, weaknesses can be higher prices, right? And OT, O for opportunity and trade, these two acronyms are actually external to the organization. Opportunities in terms of the market, right? Opportunity and trade or challenges from the competition. Right? It's very simple analysis and it is usually put in matrix form this way. Right? So you just list out what are the strengths, 1, 2, 3, 4, 5, and what are the weaknesses. Similarly, you list out the opportunities that are available. For example, EV, I have told you, EV, we know in coming years, EV is going to replace most of the petrol and diesel version of all variant, right? Take it four-wheeler or take it two-wheeler. So the opportunity is plenty when we talk about EV, electric vehicle. Okay. And what are the trades? You have to find out that also. If we talk about EV, trade can be any other emerging technology which may come up, which we do not know right now, right? Something similar to electric vehicle may come up, which may act as a trade. So if you list out all these parameters in all these 4 quadrants, then you will realize where exactly you stand. These are the few questions which are frequently need to be asked when doing this SWOT analysis. For strength, you have to ask what do you do well, what I am good at, right? What are my unique features, what are my unique characteristics, what unique resources can you draw on, what are the resources you are utilizing uniquely, what do others see as your strength, how people pursue me, how people see me. See, I am talking from the point of view of organization. Individually also you can do SWOT analysis as an individual also. You can always list down your strengths, weaknesses, opportunities and threats. This will give you an overall picture of the market and this will help you in a direction where exactly you want to land on. What will be your target, right? Similarly for weaknesses, you have to ask what would you improve. Yeah, Azad, please mute yourself. Azad Sabde. Sabde, you are unmuted. Chinmay. Yeah, Chinmay. Azad Sabde, please mute yourself. Okay, fine. So I hope all of you following up till now. So these are the questions, few questions which you can ask as an organization to yourself and list down various points for strengths, weaknesses, opportunities and threats. As I said, this is one of the examples for Rupert Trust Miles. See, location can be your strength, uniqueness. We stand out as a unique alternative to fast food. See, these are the SWOT analysis done for one of the outlet, I would say. Our first location downtown will draw in visitors and downtown shoppers. What is the uniqueness? Uniqueness is alternative to fast food and we offer consistency, highly quality food in a distinctive atmosphere. Strong management, we have assembled a team that embraces the different discipline with expertise in all areas of business. Opportunities, area growth, working families with children. This they see as an opportunity. People who have children and both the parents are working, they would like to target this type of customer. Weaknesses, lack of capital. In fact, this many a times remains weakness with most of the organization. Lack of capital. Right? All startup fund will come from loans and investors. Lack of reputation. We don't have established ourselves. We haven't established ourselves as reputable need buy provider yet. Right? And trade can be competitors and being unprepared for opening numbers. Initial poor service or product quality could discourage customer for return. So this is how they have done the SWOT analysis. This can be done by all the organization and this will tell you where exactly you stand, right? And where you would like to go. Right?
I hope all of you followed this SWOT analysis. Any doubt in this? No doubt? Okay, fine, good. Yeah. See, again, this is one of the analysis which can be done to do the market analysis apart from SWOT. This is PESTLE, PESTLEL, right? This E has been added recently. Earlier it was PESTLE in alone. And now this analysis is more recently named PESTLE, is a framework or tool used by marketers to analyze and monitor the macro environmental or external marketing environment factors that have an impact on organization. See, PESTLE is purely external, right? Or it is micro environmental analysis of the market, right? The results of which is used to identify threats and weaknesses which are used in SWOT analysis. Right? So here P stands for political, E for economic, S for social, justice. Yes, Komal? You want to? So wouldn't this be macro because it is the external environment? Right. No, I'm You not said micro environment. So these micro environment means that is a bigger environment. Micro MICRO is something which is internal to the organization. Here macro means macro environment, not micro. Macro environment means which is external to the organization, right? Yeah. So social and technological, environmental, and L stand for legal, and last E stand for ethical, right? So this can also be done for all the organizations, and this will help you again to know where do you stand, what exactly is the direction you would like to go, right? So you have to take into account all these factors if you want to do a macro level analysis, right? So this is all about the market analysis. I'd like to show you a small video on startups so that this particular subject we come to know exactly what are startups, and I would like to show you few of the good startups in India, right? Just let me know whether once I share the screen, whether the video is audible and whether you can see the video. Yes, sir, we can see. So we're going to start with yes, can you see the video? Can you see the screen? Yes, sir. Any further ado, let's take a look at the list. First in the list, we have Paytm. Paytm is an Indian company revolving around online payment services, financial services, and e-commerce founded in the year 2010. Paytm provides the customers with service related to online transactions, travel plans, entertainment options, e-store services, and much more. With the increase in online services, Paytm has estimated that as many as 20 million merchants use Paytm as their payment choice. It has become one of the popular fintech companies in the world with an estimated value of $16 billion and is estimated to grow further because of various in-based services including Paytm Mall, Paytm Financial Services, and much more. Let's move on to the next startup in the list, which is Meesho. Meesho is an Indian e-commerce company designed by IIT graduates and founded in the year 2015. Meesho has garnered positive responses from business owners all over India as it provides people in business to approach their customers directly instead of going through various transport channels. It also provides online advertising services to local business owners through Facebook and WhatsApp. Meesho is estimated to have a value of $4.9 billion with numerous investors providing it with the funding, including some of the big wigs in the line such as Fidelity Management and B Capital. Let's move on to the next startup on our list, Ola. Ola is a cab-hailing service startup company founded in the year 2010 based in Bangalore. Along with providing cab services, it also provides services for bike rides, taxis, and local transportation.
It extends its services across countries including New Zealand, Australia, and the UK. Ola has an investment funding of roughly $3.8 billion from different investors all over the globe. Along with its growth, Ola has also acquired many companies to enhance its overall value further. Moving on, next in line we have Udaan. Udaan is a startup company specializing in manufacturing goods, trade professionals, and wholesale channels. Founded in the year 2016, its headquarters is based in Bangalore. Udaan provides consumers with a wide range of business options to select from an interactive and easy app-based format, where it also provides various cross-language services to its consumers. It provides business opportunities to local business holders all over India. With this, it is gaining publicity and in turn attracting investors to develop the company further. Currently, Udaan is estimated to have gained nearly $1.2 billion as an investment in just a few years of operation. Moving on to the next startup, we have PharmEasy. PharmEasy is an Indian-based healthcare company founded in the year 2015. It provides healthcare delivery services to its consumers. PharmEasy is also involved in sample acquisitions from health centers and provides online consultancy services too. The various services provided by PharmEasy has attracted massive attention from investors, gaining roughly $651.5 million for current and future projects. It has also taken over the healthcare company's MedLife to enhance its services further. Next on the list, we have Cred. Cred is a Bangalore-based Indian startup founded in the year 2018. It provides financial and credit card services to its customers by issuing various incentives on billing through credit cards. The consumers are provided with reward points and benefits for using the company's services. The customers can also manage their card expenditure much easier through the Cred technology. Cred is estimated to have gathered a funding of $472.1 million and is estimated to grow further in the coming years in the financial technology sector. Moving forward in the list, we have Cult.Fit. Cult.Fit was founded in the year 2016, which is a healthcare and fitness startup based in Bangalore, India. The company provides its consumers with fitness-related services and tailored programs for individuals to help maintain their well-being, including traditional yoga and effective exercises. Cult.Fit has gathered nearly $404.6 million from various investors. One of them is the multinational company Unilever. The company is also predicted to grow further in the future through the unique healthcare services provided to its consumers. Moving on to the next startup, Razorpay. Razorpay is a company that provides a channel and platform for individuals and companies to make online payments easier and secure. The company was founded in the year 2014, based in Bangalore, India. Razorpay provides services through various channels including online banking, online wallets, and debit and credit cards. With such a successful growth pattern, it has attracted many investors to invest in the firm, where the value of the investment is estimated to be $366.6 million. Next in the list, we have Digit Insurance. Digit Insurance, which is an insurance sector company founded in the year 2016 with its headquarters based in Bangalore. The company provides services related to the insurance market, with its primary target being general consumers. They also suggest to their consumers about various insurance policies, including pricing matters, risk management, and other related information. It has gathered attention from many investors due to its various services in the field, including vehicles, health, and travel insurance policies, raising the company's current value to $244.5 million in the market. With this, we have reached the end of the video for the Indian startups. Yes, I hope all of you followed this particular video. These are all unicorn, right? See, not all startups land up being a unicorn. Many startups, they die down immediately after they are started, right? So if we
market analysis is not done properly, then probably just Would you like to add any other company? So as I said, unicorn. Becoming a unicorn, you need to know what is your product and what is the demand for that product. See, the product can be new product altogether, and it can be existing product, and you are competing with somebody, right? So it depends what sort of product you have and how you do the market analysis. Can you see this class notes, all of you? Yes, sir. Okay. See, this notes again you can get it from the coordinator or the admin. I've already shared this with the coordinator, and I'll be sharing notes prepared. These are my own notes prepared by me. Many contents have been taken from various websites. This is our syllabus. Before we move ahead, see, this is what we have tried to cover today. Market analysis, which is part of Unit 2, that is customer discovery. Right? In fact, market analysis will help you discover who are your customers, who are your potential customers. So the first unit is being an entrepreneur. Second is customer discovery. Third is the financial roadmap. Fourth is entrepreneurial leadership. Then the fifth one is business plan 1, and sixth unit is business plan 2. Now, how we are going to go about it? Today we have this market analysis. We have learned about SWOT and PESTEL analysis. You can go through this class notes. This will again help you read further. Whatever we have discussed today, you can go in detail. And I would like to share my session plan also with all of you. How are we going to cover? Right? In fact, the session plan also I have already shared with the coordinator. Session plan is here, session plan. See, this is our session plan. In all, we'll be having 15 sessions. Out of means for each unit, I have committed at least 2 sessions. Like for unit 1, we'll be having 2 sessions. Unit 2 again 2 sessions. Unit 3 2 sessions again. Unit 4 again 2 sessions. Unit 5 will be having 3 sessions because it is a bit comprehensive unit. Many details has to be covered up. And unit 6 will be having 3 sessions. And at the last we'll be having your doubt clearing and question and answer session, which we will be having for all the session question and answer. But here, whatever doubts and queries you have, we will be trying to cover up in this very last session, that is 15th session. I hope the things are clear with the session plan also. In case you have any doubt, you can raise your doubt. Fine. One more video is there, one very nice video by Ruar Ati. He is a very famous YouTuber. So now he had made a video on how to start your own business. We will take a look at this also. As I said, all business starts with the idea, but even you are having an idea, if you do not do market analysis, then probably you cannot materialize your idea properly. So here goes the video. I'd like to share again. Share some optimized video. So let's let me. And at the end of this video, I'll be asking you 2 questions also. इंस्पायर हो सकते हो सकता है आपका बचपन से सपना हो कोई काम करने का, किसी चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो सकता है आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, खुद के बॉस बनना चाहते हो सकता है आप हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों से इंस्पायर होकर खुद का एक पकौड़े का स्टॉल खोलना चाहते हो। तो रीज़न कोई भी हो, मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इंडिया में। आइए देखते हैं। हेलो। Yes. तो दोस्तों कोई can you please improve the quality of the video? Pardon me? Can you please improve the quality of the video, sir? You're not able to see it properly? Yes, sir. It seems very blurred. What about the rest of you?
Yes sir, it is blood. Okay. I'll try to reshare अभी it. बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए I'll try to It's reshare visible. it. It's visible. It's visible. It is clear, sir. Clear. Clear, Clear. no? That is what I'm- Yeah. Yes, It's sir. manageable because it's more of the audio, I think. So Yes, sir. Okay, fine. Just let me know whether you are able to see it properly. सबसे पहली स्टेप आपके लिए है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका आइडिया क्या है। यहाँ पे बहुत से लोग जो स्टार्टअप करने की सोचते हैं उनके दिमाग में आता है कि हमें कुछ ऐसा आइडिया सोचना है जो आज तक किसी ने भी ना सोचा हो, लेकिन मेरे हिसाब से गलत सोच है। इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि एक ऐसा आइडिया सोचना जो आज तक किसी ने भी ना सोचा हो, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आए, क्योंकि देश भर में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, बहुत कम चांसेस हैं इसके। और दूसरा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न कि आपको ये नहीं करना चाहिए, एक ऐसा बिजनेस एक नई फील्ड में जहाँ पे कस्टमर बेस एस्टैब्लिश नहीं है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, किसी ने आपसे पहले ट्रायल एंड रन नहीं किया है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि इस फील्ड में बिजनेस करने से ऐसा रेवेन्यू आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, तो एक बहुत ही नई चीज़ है यहाँ पे, बहुत ही रिस्की काम है ये। इसलिए मैं कहूँगा आपको एक ऐसा आइडिया सोचने की ज़रूरत नहीं है जो आप किसी और ने ना सोचा हो। इनफैक्ट आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको खुद क्या करना पसंद है। यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए। पहली चीज़ कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करने में मज़ा आता है। और दूसरी चीज़ कि आप किस तरह से लोगों को वैल्यू दे सकते हैं, लोगों को अपने काम से किस तरह से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, इतनी वैल्यू दे सकते हैं कि लोग आपको उसके बदले पैसे देने को तैयार हो जाएं। जब आपने ये 2 चीज़ें सोच ली हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि इन 2 चीज़ों से कोइंसाइड करते हुए कौन से बिजनेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह की बिजनेसेस पहले से ही मार्केट में है और वो किस तरह से चल रहे हैं, उनको स्टडी कीजिए आप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत मज़ा आता है, मान लो रिवर राफ्टिंग करने में आपको बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ पे एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं फिर कि रिवर राफ्टिंग करके एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए आप लोगों को किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसमें आ गया कि आप एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी खोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई तो आप एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी खोलने से पहले आप देखिए कि पहले से ही किस किस टाइप की एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में और वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। उनको स्टडी कीजिए, उनको कॉल करके पूछिए आपका बिजनेस किस तरह से चलता है और उनका बिजनेस मॉडल किस तरह से है बेसिकली। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपना एक बिजनेस प्लान तैयार करो। मान लो आप कल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अपना, तो कल से लेके अगले 1 साल तक, जब आपका पहले साल तक जो बिजनेस चलेगा उसका पूरा बजट रिपोर्ट तैयार करो कि आपको कितने पैसे लगेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने में, कितना कैपिटल और इन्वेस्टमेंट लगेगा और पूरे 1 साल में क्या क्या खर्चे आएंगे और कितना आप प्रॉफिट बनाओगे। और जो आपको कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कहाँ से लाओगे आप? अपने दोस्तों से बोरो करोगे, अपने फैमिली से पैसे मांगोगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बैंक से लोन लोगे? यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि ऐसे ही बिजनेस आप स्टार्ट करो जिसमें आपको बैंक से लोन लेना ना पड़े या कोई थर्ड पार्टी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें कि आपकी फैमिली अफोर्ड कर पाए आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस को देने के लिए। क्योंकि बैंक के चक्कर में पड़ जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपका बिजनेस फेल हो गया बाद में। तो ऐसे ही बिजनेस सोचो जिसमें कि आप खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, इतने पैसे हैं आपके पास, या फिर आपके फैमिली और फ्रेंड्स देने को तैयार हैं अपने पैसे। ये चीज़ मैं शुरू के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। एक बार आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए फिर आप लोन लेने की सोच सकते हैं। इस तरह से जो रिस्क है वो कम से कम रहेगा। और यहाँ पे आप पैसे किसी से भी बोरो करो दोस्तों, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका जो बिजनेस प्लान है, जो बिजनेस रिपोर्ट बनाई है आपने 1 साल की, वो जितनी ज़्यादा डिटेल हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल हो, ताकि कोई भी आपके बिजनेस प्लान को देखे तो वो भी कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई ये वाला बिजनेस तो काम करेगा, मतलब हम इसमें अगर पैसे लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा हमारा, उल्टा प्रॉफिट ही निकल के आएगा बिजनेस से। अब जब आपने अपना 1 साल का बिजनेस प्लान सही तरीके से बना लिया है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके बिजनेस को गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाया जाए। अब जिस तरह का आपका बिजनेस होगा उस पर डिपेंड करके अलग अलग टाइप के तरीके से बिजनेस को रजिस्टर करवाया जा सकता है। अलग अलग टाइप की बिजनेस एंटिटीज़ कहते हैं इसको, जो अलग अलग तरीके होते हैं। मैं सारे तो नहीं बताऊँगा, मैं मेन तरीके आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका आपके बिजनेस को रजिस्टर करने का है सोल प्रोप्राइटरशिप।
प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है, एक ऐसा तरीका है बिजनेस को रजिस्टर करने का जिसमें कि बिजनेस के ओनर आप खुद ही हैं। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका खुद का प्रॉफिट और लॉस होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आप पर्सनली लायबल हैं बिजनेस के साथ जो भी हो रहा है उसमें। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स इसको यूज करते हैं, जैसे कि कोई दुकानदार है वो अपनी दुकान को एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाएगा। अगर आप एक पकोड़े वाला बनना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाएंगे। प्रोप्राइटरशिप के काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशंस करनी पड़ती हैं, वो कम से कम होती हैं इसमें। अपने बिजनेस को एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाने के लिए आपको अपनी लोकल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको म्यूनिसिपैलिटी के पास जाना पड़ेगा, और अगर आप गाँव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के पास जाना पड़ेगा। कुछ शहरों में ये ऑनलाइन भी हो जाता है, लेकिन हर शहर में नहीं होता है। करीब 1000 रुपये लगेंगे रजिस्टर करवाने के, और 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये ध्यान में रख के चलना कि रिश्वत भी मांग सकते हैं, क्योंकि आप लोकल अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, और आपको तो हमारे देश की हालत पता ही है। तो प्रिपेयर्ड रहना अगर वो कुछ रिश्वत मांगे तो उस काम को करवाने के लिए। बेसिकली एज अ प्रोप्राइटरशिप आप तभी रजिस्टर करेंगे अगर आपका बिजनेस छोटा है, तो आपकी कंपनी में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं है, 4 से ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं आपकी कंपनी में। क्योंकि अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो बहुत रिस्की हो जाता है यहाँ पे। मान लो आपकी करोड़ों की कंपनी है और उसको करोड़ों का लॉस हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनली लायबल हैं प्रोप्राइटरशिप में, तो वो आपका खुद का करोड़ों का लॉस होगा। ये तो आपको चाहिए नहीं होगा, इसलिए इस केस में आपको प्रोप्राइटरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद के प्रॉफिट और लॉस को कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से अलग रखना चाहते हैं, दोनों को एक सेपरेट लीगल एंटिटीज रखना चाहते हैं, इस केस में और जो अलग तरीके हैं बिजनेस रजिस्टर करने के वो यूज होते हैं। इसी में अगला तरीका है OPC, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है, एक रजिस्ट्रेशन का तरीका है जिसमें कि आप पर्सनली लायबल नहीं है अगर कंपनी को कुछ होता है तो। कंपनी मान लो कल को डूब जाती है तो वो लोग आपके घर पे आके ये नहीं कह सकते कि अपना घर छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ो, क्योंकि आपकी कंपनी डूब गई है, उसके पैसे रीपे करने के लिए। OPC की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट अराउंड 6000 रुपये है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, और 5 से 10 दिन लगेंगे इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में। और क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है, इसमें आपको खुद की कंपनी का डायरेक्टर भी बनना पड़ेगा और शेयर होल्डर भी बनना पड़ेगा। जब आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा लोगे एज एन OPC, तो आपकी कंपनी का नाम मान लो अगर चिकारा पकोड़े वाला है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये नाम हो जाएगा चिकारा पकोड़े वाला प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट्स में OPC। अगला तरीका है कंपनी रजिस्टर करने का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी। मैक्सिमम लिमिट इसमें शेयर होल्डर्स की है 200, और 200 से ज़्यादा अगर आप शेयर होल्डर्स चाहते हैं तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्योंकि इसका नाम है, तो वही रीज़न से लिमिटेड है जिस रीज़न से वन पर्सन कंपनी लिमिटेड है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है पर्सनल आदमी की। इस कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है कि अगर कंपनी को कुछ हो जाता है, कंपनी डूब जाती है, तो उसके शेयर होल्डर्स को पर्सनली वो नुकसान नहीं चुकाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही रेपुटेबल और बहुत ही क्रेडिबल तरीका है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का। अगर आप ये करवाते हो तो जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स का आपकी कंपनी में ट्रस्ट है, जो बैंक्स का आपकी कंपनी में ट्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी कंपनी पे प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD लिखा हो कंपनी के नाम के एंड में। तो बहुत से स्टार्टअप्स अपनी कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाते हैं या फिर रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे जो बैंक से लोन मिलता है वो लोन मिलना आसान हो जाता है, और जो सीड फंडिंग मिलती है स्टार्टअप्स को, जो इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं कंपनी में, वो भी मिलनी आसान हो जाती है। इसकी कॉस्ट है अराउंड 7000 रुपये, और आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाने में अराउंड 5 से 10 दिन लगेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेबल है प्राइवेट लिमिटेड, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इसमें। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँगा आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाने का। एक और कंपनी रजिस्ट्रेशन के तरीके के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये तब काम आता है जब आप कोई प्रोफेशनल हो किसी फील्ड में, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए या चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए। और ये तब काम आता है जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हो एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिसको आपको बाद में डिसॉल्व कर देना होगा। जैसे कि मान लो आप एक बिल्डर हो और आपको एक बिल्डिंग बनानी है, जिसके लिए आपने एक कंपनी खोली, जिसमें आपने मजदूरों को एम्प्लॉय किया, इंजीनियर्स को एम्प्लॉय किया, आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय किया, लेकिन जब वो बिल्डिंग बन गई पूरी, तब आपको उस कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपने उस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप काम में आती है। मैंने जो 4 तरीके आपको बताए हैं वो 4 मेन तरीके हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को वही 4 तरीके काम में आएंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में डील करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड ही प्रेफरेबल तरीका होता है।
और अगर आप अपना ही एक छोटा सा बिजनेस रखना चाहते हैं, ज़्यादा रेगुलेशंस में नहीं पड़ना चाहते, तो प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा तरीका है। चलिए दोस्तों, अब आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अलग अलग टाइप की टैक्स रजिस्ट्रेशंस करवानी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसमें नंबर 1 पे है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है एक साल में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। कुछ नॉर्थ की स्टेट्स में मिनिमम अमाउंट 10 लाख का है और आपको तब भी करवानी पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करते हैं, या फिर स्टेट्स के बीच में हो रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करते हैं, या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स में एक अलग टाइप का टैक्स है जिसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको करवानी पड़ेगी अगर आप उन कुछ स्टेट्स में रहते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और अगर आपकी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। एक ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है जिसका नाम है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन। ये करवाना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप करवा लोगे तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपको बैंक से लोन मिलना आसान हो जाएगा, आपको टैक्स सब्सिडीज़ मिलेंगी थोड़ी, आपको एग्जामिशन स्कीम्स मिलेंगी और काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो करवा लोगे तो ही बेहतर रहोगे। अब दोस्तों, ये इतनी सारी अलग अलग टाइप की टैक्स रजिस्ट्रेशन है और वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन भी है। इन सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस को साथ में करने का एक आसान तरीका भी है। ये आसान तरीका है iSpeedBiz.com। iSpeedBiz.com एक वेबसाइट है जो इस सारे काम आपके लिए करके दे सकती है। जगदीश लाड़े ने वेबसाइट बनाई है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और ये इसी चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि कैसे अलग अलग टाइप की कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करवानी है, उनकी टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है, और एक कंसल्टेंसी सर्विसेज भी फ्री ऑफर करते हैं वेबसाइट पे। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि पूरे देश भर में लोएस्ट फीस चार्ज करते हैं, ऐसा जगदीश ने मुझे कहा है। बिजनेस रिलेटेड और कंपनी बनाने से रिलेटेड जितने भी काम कराने हैं आपको करके दे सकते हैं। अभी तो मैंने आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, लेकिन अगर आपकी कंपनी, आपका बिजनेस कोई वेबसाइट रिलेटेड है तो आपको डोमेन नेम खरीदना होगा, वो ये करके दे सकते हैं। आपको जो भी कंसल्टेंसी चाहिए होगी ये काम करते वक्त, वो ये आपको करके दे सकते हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसमें मदद चाहिए तो वो ये आपको करके दे सकते हैं। तो सारे जितने काम आप सोच सकते हैं वो ये आपको करके दे सकते हैं, वो भी लोएस्ट फीस पे। बेस्ट चीज़ ये है इस वेबसाइट के बारे में कि आप घर बैठे बैठे ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो बाकी आप सबके कोई भी सवाल हो, को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है साल के एंड में। दूसरी चीज़ है अकाउंटिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी होती है, और मैं कहूँगा आपको ढंग से करनी चाहिए। ये एक बैलेंस शीट होती है जिसमें आपका सारा प्रॉफिट लॉस, कहाँ खर्चा हुआ है, कहाँ से पैसे आए हैं, कितने आए हैं, इन सब की एक बहुत ढंग से बैलेंस शीट मेंटेन करके रखनी होती है। या तो आप इसके लिए एक अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं, या फिर आप अगर एक छोटी कंपनी है आपकी तो ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। जीएसटी के लिए अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। मंथली और क्वार्टरली कंप्लाइंसेज होती हैं इसमें। एक सेक्रेटरियल कंप्लाइंस है जो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपकी कंपनी ओपीसी, एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। और स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऐसी चीज़ है आपको करनी होगी अगर आपकी कंपनी ओपीसी है या फिर एक एलएलपी है जिसका ईयरली टर्नओवर 40 लाख से या उससे ज़्यादा है। और इन सारी ईयरली कंप्लाइंसेस पे भी iSpeedBiz.com आपकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वीडियो के एंड में अब मैं फाइनली कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, कह ही सकते हो। यूट्यूब चैनल को एक बिजनेस कह सकते हो। मेरी नंबर 1 टिप रहेगी यहाँ पे कि आप हमेशा सोचिए किस तरह से आप वैल्यू दे सकते हैं लोगों को। कस्टमर को वैल्यू देना, क्लाइंट को वैल्यू देना, या फिर लोगों को वैल्यू देना, सोसाइटी को या दुनिया को वैल्यू देना। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो जगदीश अपनी वेबसाइट iSpeedBiz.com से वैल्यू देते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। वो बिजनेस रिलेटेड काम जो आपको करवा के देते हैं उस तरह से आपको वैल्यू मिल रही है उनसे। मैं आपको वैल्यू देता हूँ। Yeah, I think that is all for this video. Now I have 3 questions to be asked to you, all of you, right? What are the 4 ways you have watched this Dhruv Rathi video? अपनी नॉलेज के has just a minute. He has started his video by telling us what are the ways through which you can register your company. He has pointed out 4 different types of ways through which you can register your company. Now, can somebody tell me what are the ways? Just raise your hand. Proprietorship, private limited. Fine.
one person, OPC. one person, One yeah, person, OPC. one person, good. Abhishek. Limited liability OPC, partnership. limited liability. LLPs was there, right? Limited Yes, liability LLPs. partnership, right? And what was the last one? Public, Private limited. Private limited. private limited, yeah. Right? Private limited. So these are the 4 ways. And when is the GST? When is the firm need to register itself for GST? Right? Quarterly and yearly. 10 Sir, lakhs, right? MSME is also one Monthly point. and quarterly. How much should be the turnover if you More than 20 lakh. 20 lakhs, right? And for northern, few of the northern state, it is only 10 lakhs. 10 lakh. Currently it's 40 lakhs, not 20 lakhs. It has been It has changed to increased. 40 lakhs. Right. Exactly. Who was that? Nishad. Okay. Nishad. Good, Nishad. And at the last, very last, what was the word he has used for the new upcoming entrepreneurs? What exactly? See, he has suggested that just by knowing, by just gazing at various ideas, your business is not going to run. It is not at all needed that it has to be unique, right? It can be something which is already there in existence. What is the word that he has used? What should you deliver to the customer? What is that particular product? Value. Value to the value to the product, yeah. Value. Value to customer. Muskan. Value. Value is the Value to the customer. value is the thing. See, all the time we have to find out. It's value to the customer. Yeah, to give value to the customers. See, जो भी मिल रहा है customer को, if you are able to add value to your product or services, then and then only the customer will go for that product, isn't it? So value is very important. You have to find out how you can add value to your product compared to your customers, compared to your competitors, right? So you have to do for that. You have to do market analysis, right? Just to find out the gaps. What are the gaps that are present? And if you are able to fill those gaps through value, then definitely you can become market leader, right? So value means you are giving something extra with the same price, right? Something extra which the competitor is not providing you, the customers. So you have to find out what sort of values can be added. I hope all of you getting me what I'm saying. Yes, sir. It can be giving extra services. It can be giving something extra. जैसे अपन ad में देखते हैं कि 10% extra, right? We are giving you 10% extra with the same price. Like for example, chocolates. Many time you see is the extension which says that 20% extra, right? So it creates a value for a customer that with the same price, he or she is able to get more. As I said, it can be related to goods also. It can be related to services. Like you must have heard about Urban Company, which gives you services at home, may it be cleaning services or may it be plumbing, all sort of things that are needed for a home. They provide those services, including including shaving, haircuts, and all sort of those sort of things also. So that is, the company has created a value for the customer. That customer don't have to move out of his place, move out of his residence. He can order this Urban Company and order, like if your refrigerator is not working properly, then you can go on, download their app and order directly, so that the service wala will come to at your home and repair the refrigerator which is not working. So value addition is very, very important. If you are not able to add any value, then definitely the customers won't be interested in your product, because the same thing they are getting from your competitors. So they won't be that much interested. Something unique, something value addition has to be done, right? So I hope all of you enjoyed this lecture and followed whatever we have discussed. Any doubt up till now? No, sir. Good session. Just one point, sir. Like, do we have like some reference book, something in line with the curriculum? Yeah, see, just in the morning I've spoken to Chandan sir. I'll be sharing this PPT to you. No, not this PPT. This PPT will be there on Elements platform. One more PPT I've shown. That and a few reference books I'll be sharing with coordinator, right? Chandan sir. Okay. You can get in touch with him. One of the PPT I've shown you. I'll be sharing. Yeah, entrepreneurship guide. This is excellent, and whatever Govarati has talked in this video, all these points
Yes, sir, just one last point, sir. Like, do you also get enough MCQs on this subject? Again, Yes, just yes. I'm thinking ahead for the Last year, exam. yeah, in fact, good, Abhishek, you reminded me. See, in coming lectures, we'll be running few MCQs at the end, so that I come to know whether you have followed it or not. Don't worry about it. In fact, today I didn't got the time to download those MCQs, but definitely in upcoming lectures, we'll be committing for 10 minutes time for MCQs at the end. Okay. So thank you all of you for attending the session. Thank you so much. I'm ending the session as of now. Thank you, sir. Thank you, and see you in the upcoming session. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. हाँ बोला सेशन सुरू होता है नाही काय बोला काय नाव झालं अरे बापा मतलब तू काय अगं विचार मंथन करायला लागतं